Hello students, I am Praveen Kumar from Patna Women's College, Autonomous. In today's tutorial, I am going to explain step by step about Servlet registration form, in which I am going to use three-tier architecture. In the first tier, we will use HTML form. In the second tier, we are going to use Servlet with JDBC, and in the third tier, we use database as a Derby. So now I am going to elaborate you step by step process how to develop a registration page using Servlet and Derby database. Today I am going to show you how this registration page works and how do we create registration.html page. Then we have to create one servlet registration.java, and then that HTML file will hit first, and then on the submit button it will request to the servlet file, and then after servlet, within that servlet we have to write database connectivity code to store all the information which is collected from user, and we have to save that information in a particular table. The table name may be user or maybe registration, anything whatever you want to give. So we have to do that only. So I'm going to create one HTML page first, and that page name is registration or user sign up page, whatever you want to write, you can. This is the user interface actually, where we used to design a form. So within that form, we have to keep all the fields which required. So according to the form, we have to write two math properties. One is the method, we have to use post, and second, we have to write action, where we have to take the action. Then we must keep action with the registration page. So we do create one registration page with the same name, and for the file sequencing, we have to use the absolute path. Now, for the value, we have to collect email ID, type equals to text, and ID equals to the email equals to password. Password, and the field must be pass. Mobile. अभी हम चार फील्ड लेके चलते हैं, and last one is that could be one submit button. Type submit.
आईडी हम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। जब जरूरत हो तो देना चाहिए, अदरवाइज सिंपल एक बटन है तो कोई जरूरी नहीं है। वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट। So this is my signing part। इन्हें भेजा नहीं तो मैं सिंपल डिजाइन पे ही दिखा सकता हूँ कि ये मेरा सा डिजाइन है। एंड देन वी हैव टू क्रिएट वन सर्वलेट and we must keep that servlet name is registration। That registration servlet has been created now। with that registration servlet अभी हमको HTML output as such नहीं चाहिए, we need processing over here। So first we need to collect all the values from the client side। So यहाँ से जो भी value आएगा मेरे पास वो सारा value मुझे collect करना है and then database से related task को यहाँ पे perform करना है, that means कि process करना है। So for that, first we need to include library of my Derby database। So this is the phrase project which we have created for this semester, and right now there is no library added for my database, so I have to add the database library। So on the library folder I have clicked on the right click and then I have to select that jar file, this jar file, and then I have to browse the location। So location of this Derby file is C drive, program files, Glassfish 4.1, then Java DB, and within that Java DB, there is a lib folder, and within lib folder, you can find this much of libraries। So we have to choose two jar file. One is the Derby and second is the Derby client। So this two jar file is going to be used while database connectivity। Basically Derby client is used, but some of the library may be used from the Derby। So basically we are going to use the Derby client dot jar file। So we have to include both of these libraries within my project। So once I have included, that is shown over here। एंड ये एक बार करना है प्रोजेक्ट में, एक बार करने के बाद फिर ये तुम्हारे प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो गया। अब नेक्स्ट टाइम से हमको नहीं करना है, ओनली वंस इन अ प्रोजेक्ट। जब भी हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमको एक बार करना होगा। देन वी नीड टू इंपोर्ट दैट java.sql.string। this is for database। See, this is the output which we have designed, and accordingly we have to write the name, email address, password, name, and mobile number। Now we have to collect this in this registration.java file। So I am going to create local variable for all, and with the request object, request dot get parameter, and then the control name txt email। The same way we have to create all the variables and accordingly we have to map it। So second is password, third is name, fourth is mobile। So txt pass is the, then txt name and txt a have filled। So these are the ID which we have to collect and the value from that। So ये value निकाल के हमको दे देगा local में। Now we have to do the database portion work। So to do the database portion work, I have already shown you the database connectivity and all। So I am going to copy this two line which is content, and I just this, we must use this try catch because here there might be exception code and it is pre-checked exception under।
सो जब भी हम डाटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं तो ये प्री चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर आता है जावा में. सो वी मस्ट काउंट दैट एक्सेप्शन. नाउ we are connected with the MCA 32021. So after that we need to verify कि ये यहाँ पे सब कुछ है कि नहीं. MCA 32021. So within that there must be one table that is called TBL user, and within that we have some fields. So user ID, email address, password, name, mobile and date of birth. Date of birth field अभी हम नहीं ले रहे, मे बी हम इसको एडिट में कभी करा ले. सो अभी मेरे लिए जो फील्ड आएगा यूजर से वो आएगा ईमेल, पासवर्ड, नेम एंड मोबाइल. यूजर आईडी खुद से जनरेट करना चाहिए, ऑटो जनरेट मोड में हमको ले जाना होगा. अभी ये ऑटो जनरेट मोड ऑन नहीं है, अभी हम खुद इसको पास करेंगे. सो वी नीड टू क्रिएट वन एसक्यूएल स्टेटमेंट फॉर इंसर्ट. तो यहाँ पे हमको अब प्रिपेयर स्टेटमेंट क्लास इंटरफेस का यूज करना पड़ेगा. प्रिपेयर स्टेटमेंट इज एन इंटरफेस. सो ps equals to on dot prepare statement, and here we need to use the SQL to insert into PBL user, and then we have to put the variable that is column name, because I'm not going to insert in all the field. Email ID, password, name, comma, mobile. So this could be the variable, and now values. So values, within values we have to use parameterized query, because the value that we are going to insert, that comes from user end and from the dynamic scope. So parameter बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. जितने वेरिएबल आपने यूज किए उतने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाइए. So first 1 2 3 4 5. So 1 2 3 4 5 6 बन गया ये. So 5 dynamic value is going to be come, and how do we bind this value? So we have to bind this value like ps dot set string, और अगर specific value है तो उसका specific function भी है. Now the index of parameter. So index of parameter start from 1 1 2 3 4 5. So 1 represent which value? 1 represent user ID. So here 1. Okay. तो ये 1, एंड यहाँ पे क्या आएगा? यूजर आईडी. तो यूजर आईडी हम इसको 1 भेजते हैं क्योंकि अभी फर्स्ट है और अभी मेरे पास कोई डायनेमिक वैल्यू नहीं है. दूसरा वैल्यू जो सेट करना है string. Now the parameter is 2, and second value क्या जाएगा? email address. So we have email as a variable. Now third one, ps dot set string b, and third value is password. So we have pass filled variable. Now ps dot set string port number value, that is for name, and for the fifth string value, that is for mobile, right? So now I have prepared one statement having this insert is SQL with 5 parameters, and that parameter is bind like this. So we bind all the parameter with the respective values. You have to mind it, because अगर यहाँ पे सीक्वेंस गड़बड़ हो गया या वेरिएबल गड़बड़ हो गया तो डाटा मे बी डाटाबेस में इंसर्ट होने के समय प्रॉब्लम करे, या फिर वहाँ पे कोई एक्सेप्शन जनरेट हो. तो अब ये स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड है. नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट. सो ps dot execute query, execute update. So this is
going to be executed. After execution अगर सक्सेसफुल है तो यहाँ पे हम जस्ट एक मैसेज दिखा देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सॉरी रिस्पॉन्स नहीं out dot println and within that सक्सेस का मैसेज दिखाते हैं, एंड अगर एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन दिखाते हैं। एक्सेप्शन कैसे दिखाते हैं, ex dot to string because this is the object of that exception class. Now this is ready. So यहाँ पे जैसा हम लोगों ने डाटाबेस को पढ़ा था कैसे यूज करना है डाटाबेस, इन द सेम वे हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एंड नाउ दिस database is going to this servlet is going to insert a particular value which is coming from that HTML file into the database. So first we need to execute from this HTML file. See, within that HTML file यहाँ पे email address भरते हैं, suppose praveen@gmail.com, password 123, name Praveen, mobile number whatever. तो सबमिट करें। सबमिट बटन पे ये मेरे पास ये एक्सेप्शन काउज हुआ। क्या एक्सेप्शन काउज हुआ? The statement was aborted because it would have caused a duplicate key value in a unique or a primary key constant. So now there is an exception. Why that exception comes? Anyone? Exception को पढ़ लिया? तो यूजर आईडी हम लोग ने प्राइमरी सेट किया था। Yes. मतलब जब टेबल वो ऑलरेडी 1 सेट है और हम लोग दोबारा 1 दे रहे हैं। दोबारा 1 दे रहे हैं। ये मैंने जानबूझकर किया था। और ये देखो अब इससे तुमको एक पता चल रहा है कि चूंकि हम एक रिकॉर्ड तो पहले से भर रखे थे और उसका यूजर आईडी 1 दे रखे। हाँ, यस सर, यस सर। That is the reason behind the exception. So exception is very much clear कि what you have done wrong. So यहाँ पे क्या बोल रहा है? डुप्लीकेट की फायर हो रहा है for the primary key field. So अब हमको यहाँ क्या करना चाहिए? यहाँ पे just in the servlet because I have hard coded this variable, ये hard coded variable है, बाकी soft coded variable है, that means कि dynamic value आएगा। So ये hard coded variable को हमको अभी फिलहाल 2 करना होगा and then I have to run it again. So just refresh this page, resend the value and this do success. That means कि now that particular HTML is collaborated with your this Java servlet file, that is registration.java file, and this file having connectivity with a particular database and fired one SQL statement with a particular value. If it succeeded, if execution is succeeded, then success message will come. If not, then exception will come. So दोनों ही मैसेज तुम देख चुके। तो जब गलत हुआ था तो एक्सेप्शन आया, जब सही हुआ तो ये सक्सेस का मैसेज आया। सो नाउ इफ यू ब्राउज you just execute again, you will see this is the second record which is coming from the user browser, and that is the first record which we have inserted in the database from the database terminal only, है ना? तो दूसरा रिकॉर्ड जो हम लोगों ने भरा था वो आ गया। अब तीसरा रिकॉर्ड भरने के लिए फिर से हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। सो आई नीड टू रिप्लेस दिस वैल्यू विद अ डायनेमिक वैल्यू बिकॉज ये हम नहीं कर सकते, इस तरह से काम नहीं होता है। सो वी मस्ट क्रिएट दिस यूजर आईडी इन सच ए वे कि ये खुद से इंक्रीमेंट हो जाए। तो इसको करने का 2 तरीका है। ऑटो इंक्रीमेंट सर प्रॉपर्टी होता है, वो भी मतलब यूज कर सकते हैं जब बना रहे होंगे। यस। सो टेबल का क्रिएशन, हाँ, एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन जो डाटाबेस का प्रॉपर्टीज है उसको यूज कर लो, या फिर आप खुद से इसका लॉजिक लिख लो, दोनों ही तरीका है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में चूंकि फास्ट काम करवाना है तो यहाँ पे क्या करते हैं, डाटाबेस में ही हम यूजर आईडी को क्या करते हैं, इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी, ऑटो इंक्रीमेंट प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं।
जब ये टेबल क्रिएट होता है ना उस समय ही करना होता है, अब हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये टेबल, यस सर। हाँ अभी इस पर्टिकुलर डाटाबेस के, चूंकि ये सिर्फ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से डाटाबेस बनाया हुआ है, बट इन द प्रोफेशनल डाटाबेसेस में ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। अगर तुम MySQL यूज कर रहे हो या Oracle यूज कर रहे हो, MS SQL यूज कर रहे हो, तो उसमें कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं, एट द रन टाइम भी चेंज कर सकते हैं, वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। बट ये सिंपली यस स्टडी सर। पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है, तो यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन है कि जब क्रिएट कर रहे होते हैं ना उस समय ही ये लॉजिक हमको सेट कर लेना होता है कि क्या हमको करना है। सो अभी तो फिलहाल यही है कि अब फिर से डाटा टेबल क्रिएट करेंगे तो मेरा ये ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड हो जाएगा। सो ये टास्क तुम्हारे पास है, यू हैव टू डू इट, कि हाउ डू वी क्रिएट ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड इन द डर्बी डाटाबेस। दिस इज योर टास्क, यू हैव टू क्रिएट first field of any table as a auto increment field, and how do we create it in the Derby, you have to find it out, ये मिल जाएगा आसानी से। So you must create your table with the auto increment field, that we do not have to pass this value every time when we execute the statement, and after we have to remove this from everywhere, यहाँ से भी रिमूव करेंगे, यहाँ से पैरामीटर हटाएंगे और यहाँ से ये हटा देंगे जब ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड हो जाएगा तब। अभी के सिचुएशन में ये ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है, सो आई हैव टू यूज दिस यूजर आईडी फील्ड, राइट? Yes, sir. Yes. So by using this way, your first page is created, and this is the first dynamic page which is fully dynamic creation, and ये पेज तुम्हारे चाहे तुम किस भी टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हो, किस भी टेक्नोलॉजी में बना रहे हो, ये पेज जब क्रिएट करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली द वे ऑफ वर्किंग शुड बी लाइक दैट। किसी भी टेक्नोलॉजी में सेम तरीके से काम होता है, इट माइट बी डिफरेंट हो सकता है कि जैसे अभी हम जेएसपी बताएं तो जेएसपी में क्या होता है ना कि यूजर इंटरफेस और सर्वर साइड एक ही पेज पे लिख देते हैं, बट जब मेरे पास सर्वर साइड सर्वलेट जैसा टेक्नोलॉजी है जहाँ पे मेरे पास ये सुविधा है कि हम यूजर इंटरफेस को टोटली अलग रखें और सर्वर साइड कोड को टोटली अलग रखें, तो ये फैसिलिटी भी है। और इनलाइन कोडिंग भी है, हम चाहते हैं बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें कि इनलाइन कोडिंग होता है, और इनलाइन कोडिंग में क्या होता है कि फॉर्म बना लिए, यूजर को दिख गया और इसी में हम नीचे इसका सर्वर साइड प्रोसेसिंग भी लिख सकते हैं। जैसे अगर PHP कर रहे हो, पाइथन कर रहे हो, अगर यहीं पे हम लोग JSP करेंगे, तो ये सब में फैसिलिटीज है ये कि हम इनलाइन कोडिंग कर सकते हैं, हमको अलग अलग से दो पेज नहीं बनाना पड़ेगा, हम एक ही पेज पे दोनों टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं। तो PHP अगर लोग किए होंगे तो ये बहुत अच्छे से पता है कि रजिस्ट्रेशन पेज पे सेम पेज पे भी काम कर सकते हैं, और चाहे तो हम अलग अलग PHP पेजेस बना सकते हैं, अलग से जावा पेजेस बना सकते हैं। डॉटनेट में भी अलग से काम करने का तरीका है, डॉटनेट भी बोलता है कि यूजर इंटरफेस अलग रखिए और अपना सर्वर साइड कोड को अलग रखिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपका फाइल जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। तो उसी कंसेप्ट को यहाँ पे सर्वलेट पे भी है। सर्वलेट क्या कर रहा है कि आपको पूरा जीवा इंटरफेस अलग करवा दे रहा है और आपका पूरा सर्वर साइड कोड अलग हो जा रहा है। तो इस तरह के काम को हम लोग कोलैबोरेशन बोलते हैं, जहाँ पे कोलैबोरेट हो रहा है HTML पेज टू सर्वलेट पेज। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं, एंड आई होप कि जैसे जैसे हम बता रहे हैं, अगर इस टेक्नोलॉजी पे किसी का प्रोजेक्ट है तो वो काम कर सकते हो, एंड बाकी अपना प्रोजेक्ट काम करते रहना, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाना इस बार तुमको कोड करना है, तो कोड करने के लिए तुमको इस तरह से ही कुछ काम करना होगा। जैसा अभी मैंने एक डेमो दिखाया जिसमें कि रजिस्ट्रेशन पेज हम लोगों ने बनाया, और रजिस्ट्रेशन पेज में हम लोग यूजर से वैल्यू ले रहे हैं एंड उसको फिर डाटाबेस तक पहुंचा रहे हैं। तो ये जिस भी टेक्नोलॉजी को तुम फॉलो कर रहे होगे, कुछ इस तरह का ही काम करना होगा। माइट बी लैंग्वेज और वर्किंग वे इज डिफरेंट, किसी का पाइथन में होगा, किसी का माइट बी PHP चूज करके रखे होगे, तो PHP पाइथन किसी में बनाओ, काम तो ऐसे ही कुछ करना होगा, बट द वे ऑफ वर्किंग माइट बी डिफरेंट। कि यहाँ पे जैसे हम वेरिएबल बनाए, जैसे हम डाटाबेस कनेक्ट किए, ये वहाँ पे किसी और तरीके से हो रहा होगा, लेकिन कंसेप्ट यही है, ओवरऑल कंसेप्ट यही है।
तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। नाउ अब हम HTML पे और भी कुछ कुछ काम कर सकते हैं। सपोज ये मेरा HTML फाइल है और ये HTML फाइल पे आए और अभी हम सबमिट बटन पे क्लिक कर दिए, ब्लैंक है, सबमिट बटन पे क्लिक कर दिए, तो अभी तो ये डाटाबेस तक पहुंच गया और ये मेरे को फॉर्मेट एक्सेप्शन भी देने लगा। तो क्या करना चाहिए अभी हमको? क्या करें कि ये सबमिट बटन यूजर क्लिक करे तो ब्लैंक वैल्यू ना ले? सर ब्लैंक वैल्यू वहाँ चेक कर लेंगे। कहाँ चेक करेंगे? सर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए सर कोड में नल चेक कर लेंगे। और कोई क्या करना चाहिए? आई डोंट वांट टू सेंड द ब्लैंक वैल्यू टू द डाटाबेसेस, क्या करना चाहिए? सर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए सर। रिस्ट्रिक्शन कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? लोग प्रोजेक्ट नहीं बना रहे क्या? प्रोजेक्ट बना रहे हो ना तुम लोग? यस सर। कैसे कर रहे हो? ये सब तो इनकाउंटर होना ही होना है। अगर वेबसाइट है, मोस्ट ऑफ द आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू डेवलप वेबसाइट एज योर प्रोजेक्ट, सो आई होप कि तुम ये सब टास्क तो करोगे ही करोगे, मिनिमम होना चाहिए, ये सब तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी है। अब इसके आगे फंक्शनलिटीज होते हैं, ये सब तो मिनिमम है, मिनिमम के लिए फंक्शनलिटीज काउंट नहीं होते, मैक्सिमम में फंक्शनलिटी काउंट होते हैं। So you have to find it out. I am giving you the time to find it out, how to be do that. I don't want to send the blank value to server or to databases. How do I stop this? This is your homework. So हमको लगता है 2-3 होमवर्क अभी हम दे चुके हैं. You have to do that. First you need to find how to create table with the auto increment field. Second, you have to work it out ki how do we stop submitting blank field in web pages. ठीक है? Yes. यस So I think all of you are doing with the web project and you must have to do this. So you just find it out how can you do it. Thank you.